परिचय देंगे, 10-15 मिनट में परिचय खत्म होना चाहिए। फिर राजेश कांबले सर की आज आवाज ठीक नहीं होने की वजह से हमारे बीच में आकाशदीप सर है, जो मुंबई में रहते हैं और वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी है और बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं। वो प्रेजेंटेशन देंगे आधा घंटा, और उसके बाद फिर बाबा साहब की, तथागत बुद्ध की स्टोरी आपको सुनाई जाएगी। और उसके बाद आप अपना अनुभव कहना है। आप जितने भी बच्चे हैं जिनको कुछ कहानी आती है, उनको कुछ सीखा है उन्होंने, खासकर तथागत बुद्ध के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में, बाबा साहब के बारे में, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, रमाई, इनके बारे में अगर आपको आता है तो वो बताना है। अगर वो भी नहीं आता है तो स्कूल में से आप क्या क्या अच्छी बातें सीखे हो उसके ऊपर दो दो मिनट में आपको बताना है। ठीक है? सभी लोगों ने खाना खाया है ना? यस सर। गुड। और खाने में क्या क्या खाते हो आप? बच्चों, दूसरे बच्चे किधर है? हमारे 60-70 बच्चे किधर है? अभी तक सर वो ज्वाइन नहीं हुए ना, कांबले सर। जल्दी जल्दी करो, ज्वाइन करो। कोई आई तो नहीं रहा। सर बच्चों को ज्वाइन कराओ। हाय लवली चाइल्ड, वेरी लवली चाइल्ड, वाह वाह। बोलो बाबा कटके। समान जेपी अम्बेडकर सर। मम्मी सर। नमामि। हाय सर। जेपी अम्बेडकर सर, एक बार स्लोगन लगा दो बच्चों को। अच्छा। सर बच्चे और लाने दो, और आने दो, और एक आने साथ दो बोलेंगे, हमारा संघ, संघों का संघ, समण-समण, जुड़ेंगे, जीतेंगे, जीत है जुड़ने की, जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे। गर्व से कहो, हम समन हैं। साधु साधु साधु, संघ नमामि, संघ नमामि। जी मैंने मन को ऐड। तो बच्चों, आप में से कौन है अभी 2-3 मिनट के बाद भारत के संविधान की उद्देशिका का वाचन करने के लिए? जो भी बच्चा सामने आएगा वो हिंदी में बताएगा, इंग्लिश में दूसरा बताएगा, और अपने अपने रीजनल लैंग्वेजेस जो है, मराठी है, बंगाली है, गुजराती है, उसमें भी आप भारत के संविधान की प्रास्ताविका पढ़ सकते हो। अंकल तो कौन पढ़ेगा हिंदी में? हाथ, हैंड रेज करो। किसको भारत के संविधान की उद्देशिका, प्रास्ताविका ठीक से आती है? हैंड रेज करो। या बताओ। ओ कटके सर। जी ये सर। छोटा बच्चा संगम नमामि करेगा सबको, चलो कर दो। हाँ, कर जल्दी करो। संगम नमामि। क्या बात है, क्या बात है। कौन है, कौन है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कौन है? सबसे छोटा समन संगी जुड़ा है हमारे बीच में। तालियां बजाओ सब इसके स्वागत के लिए। सभी बच्चे ताली बजाएंगे। You are most नमामि करो welcome। सबको, चलो। नमामि। ये कौन है? का नाम बताओ। अभी तो वो आपका नाम बता रहा है, बाबा कटके बाबा। बाबा के बाबा। तो चलो बच्चों, भारत के संविधान की उद्देशिका कौन बताएगा हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में, और उसके बाद रीजनल लैंग्वेजेस में। हिंदी में कोई बड़ा बच्चा पढ़ देगा ना सर? हिंदी में कोई बड़ा बच्चा पढ़ रहा है, अंग्रेजी वाले सब आएंगे, अंग्रेजी सब पढ़ देंगे। होस्ट बनाओ, राजेश कामले को होस्ट बनाओ। राजेश कांबले को होस्ट बनाओ सर। मैं प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करूंगा, अक्षदीप बोलेगा। हाँ, राजेश कांबले सर प्रेजेंटेशन पेश करेंगे और आकाशदीप सर उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। सर आकाशदीप जो है, आप उनको इंट्रोड्यूस करो कटके सर। मैंने इंट्रोड्यूस किया है, फिर भी मैं अभी प्रास्ताविका होने के बाद इंट्रोड्यूस करूंगा सर, डोंट वरी। बच्चों, कौन कौन बताएगा हिंदी में? बोलो। अतेंद्र सर, ये बच्ची बताएंगे आपकी? वो सर इंग्लिश में पढ़ देगी, हिंदी में नहीं। इंग्लिश में।
हाँ चलो इंग्लिश से शुरू करो। चलो इंग्लिश शुरू करो, स्टार्ट करो। बोलो। Um, Sanganamami, Good my name is Devanshi Singh Maurya. The Constitution of India, the people of आवाज India, बढ़ाओ बेटा थोड़ी। the people of India having solemnly resolved to constitution India into sovereign, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts, expression, beliefs, faith, and worship, equality of status, of opportunities, and to promote among them all fraternity, assuming the density of individual and the unity of nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, to Hobby adopt, insent, and give to ourselves this Constitution. Sanganamami. बढ़िया बेटा। कभी भी एक बात याद रखना, जब भी आपको पुकारा जाएगा तो पहले अपना नाम बताना, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो वो बताना, और आप कहाँ से हो ये बताना, और उसके बाद फिर अगली बात करना कोई भी। तो आदित्य, जयदित्य आप बताओगे हिंदी में? जयदित्य, Yes, sir. हाँ आप हिंदी में पढ़ोगे प्रास्ताविका संविधान की? अंकल हिंदी में मुझे नहीं आती, मुझे इंग्लिश में आती है। ओके, सभी इंग्लिश वाले हो। Hello. तो कौन हेलो। अब बच्चा है सर हमारे जेमिना को बीच आती में है, जो जेमिना हिंदी हिंदी कर में लेगी। पढ़ना चाहता है? सर जिमेना कर लेगी, जी? सर जेमिना मोहन कर लेगी। हाँ बोलो बेटा। जेमिना, जेमिना Yes, तो sir. ऑलराउंडर है, वो तो आप सभी ड्रामा को भी जय करती भीम है, नवोदय, गाना भी गाती है। आप सभी को जय भीम नवोदय संगम जय भीम होता है बेटा। आज मैं परिचय दे भारत दो की आपका, संविधान, परिचय दे दो बेटा पहले। आप सभी को जय भीम नवोदय संगम। मेरा नाम जिमेना मोहन है। मैं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से यूपी में रहती हूँ और मैं क्लास 7th में रहती हूँ। और आज गुड। मैं भारत की उद्देशिका हिंदी में पढ़ना चाहती हूँ। जी। तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उसके सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईयू मिति ग्रांड निश्वेत शुक्ला तत्मी स्वंत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान की अंगीकृत अधिनियमित और आत्मनिर्भर पेश करते हैं। संगम नमामि संगम नमामि। संगम में बेटा जो हमारे समन संघ की जो किताब है ना, ग्रंथ, उसमें से बहुत ठीक से दी है, अगले वक्त उसमें से पढ़ना, ठीक है? बहुत अच्छा कहा आपने, कोई Okay, बात sir. नहीं है। चलो और कोई बताएगा? सर मराठी, हिंदी, हिंदी, इंग्लिश, और किसी में कोई सर बताएगा हिंदी, बच्चा? सर हिंदी। हिंदी में? यस सर। अच्छा बताओ, चलो। मेरा नाम जयदत्य सिंह अंबेडकर है। मैं डीएम में स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं 5th क्लास में हूँ। आज मैं संविधान की उद्देशिका प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। थैंक यू। साधु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कहा बेटा। अभी हम क्लास शुरू करते हैं बच्चों। अभी आपने गौर से सुनना है, क्योंकि राजेश कामले सर की आवाज फिर भले ही ठीक ना हो, लेकिन आकाशदीप सर हमको इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से समझाएंगे। आपने सुनना है, और जिसको नोट डाउन करना है वो अपनी पेन ले ले और अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये होने के बाद आपके मन में जितने भी सवाल होंगे जो जो कि आपको पढ़ाया जाएगा, उसके ऊपर आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, या फिर आपके पास उससे अलावा और अगर कोई एडिशनल है तो वो बात भी कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग बाबा साहब के बारे में, तथागत बुद्ध के बारे में उनकी कुछ कहानियां सुनेंगे। और उसके बाद आपके पास भी जो भी कोई स्टोरीज होंगी, कोई कहानियां होंगी, तो वो भी आप छोटी छोटी 2-2 3-3 मिनट में बता सकते हो। तो हम अभी रेगुलर क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी अटेंशन में हो? ठीक है। Excuse me, sir. तो मैं राजेश कामले सर को यहाँ पर इनवाइट करता हूँ। पहले मैं Excuse राजेश me, sir. कामले सर का परिचय देता हूँ। राजेश कामले साहब आईआईटी मुंबई से पास आउट हो चुके हैं। आईआईटी के बारे में आप जानते होंगे कि भारत की सर्वोच्च एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होती है, उसमें से आईआईटी एक होती है। और उसकी परीक्षा, उसकी एग्जाम बहुत कठिन होती है, हार्ड होती है। उसके बाद जो भी बच्चे लगन से पढ़ाई करते हैं वो आगे जाके आईआईटी में जाके, आईआईएम्स में जाके पढ़ते हैं, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, आईएएस में इधर उधर जाते हैं। तो ऐसे ही राजेश कामले साहब बहुत पढ़े लिखे अंकल है, तो उनकी आज आवाज नहीं होने की वजह से वो प्रेजेंटेशन करेंगे। और आकाशदीप सर जो है वो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, वो एनालिटिकल स्टडी भी करते हैं, बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं वो, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में भी कोच करते हैं वो। तो मैं उन दोनों को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। राजेश कामले सर प्रेजेंटेशन देंगे इंग्लिश में। अगला वाला जो प्रोनाउन के ऊपर आज बात होगी, उसके बाद वो बताएंगे क्या क्या सीखना है, और आकाशदीप सर उसके बारे में बताएंगे। तो ओवर टू राजेश कामले सर एंड आकाशदीप सर। तो सभी ने सुनना है, किसी ने बीच में माइक खोलना नहीं है। शांत तरीके से सब लोगों के पास आवाज जानी चाहिए। ठीक है बच्चों? चलो सर। Yes. राजेश कामले सर, आकाशदीप सर, प्लीज। Akash, continue. ओके। यस। तो बच्चों, अभी हम लोग प्रोनाउंस के बारे में देखेंगे। तो जो वाक्य रहता है, वाक्य में जो करता रहता है उसे इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। अभी जैसे और फॉर एन आपकी आवाज एग्जांपल, बढ़ाओ थोड़ी, आकाशदीप सर। Akash, speak as far as possible. Speak in English. जब समझ में ना आए तो वो हिंदी में चले जाओ। ओके फाइन, ऑलराइट। सो pronouns are words that are used in place of nouns, and noun is the name of an object or the name of a person. So let's say one of the students who have attended, like Jimena. So when Jimena is going to do something, then Jimena becomes the noun or the subject in a sentence. So let's say Jimena is attending this Zoom meeting. So Jimena becomes the subject, and if we want to substitute Jimena with some other word, for example, she is doing the Zoom meeting and she's taking notes. तो ये जो she होता है, this she is a pronoun. Now she is a kind of personal pronoun, and
it is used in the subjective case in the sentence that I said. Now there can be many different cases also for the use of a pronoun. In the subjective case, for example, I am speaking. So I is a subjective case. But you are listening to me, and for you, when we are all coming together, we the people, so we is also subjective case, but when we say our country, us, then it becomes objective case. So सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो डिफरेंस है वो आगे जाके एग्जांपल्स में धीरे धीरे क्लियर होगा. For now, just try to keep in your mind there are three ways of looking at the pronouns. The case will tell you which way to look at it. When you are in the driving seat, or when you are in the first part of the sentence, that is the subject. And when you are in the second part of the sentence, then you become the object. So second part मतलब कौन सा part? Verb के बाद में जो भी आता है, after the verb is generally the predicate, or there onwards is the objective part. Possessive is when we are talking about belongings, our belongings, our nation, our constitution, or other people's belongings. So when you're pointing at them, जैसे आप उंगली दिखा के बोलोगे कि your belonging, यानी उसका, नहीं सामने वाले को बोलोगे तो आपका, तो आपके बदले और your आ जाएगा. So your belongings. When you're talking about somebody who is not here, not between you and the other person in front of you, then it becomes there. So the third person. So there are three kinds of main conversations happening between you and somebody in front of you, or between you and someone talking about somebody who is not in front of you. So for those cases, we will use their, them, aisa. Now personal pronouns mein you are trying to put a person and then describing that person's relations and objects and stuff. In demonstrative pronouns, you are trying to point some object in your area. Either it is right in front of you or it is far from you. So if it is very close to you, then it is this. If it is one object, so this computer, this screen is in front of me. And if it is far from you, then there is that school, that shoe, that window. When the thing in front of you is more than one in quantity, then we will use these. So these keys on the keyboard, or these books, or these pens on your desk. And when the same you want to describe far away, multiple objects, then those pigeons in the sky, those buckets in the bathroom. So that is to point out objects. Demonstrative pronouns are used. After that, so like I said, pronoun will substitute a subject generally or an object. Now, when you don't have a particular object in mind, when you want to ask about something, that time you need interrogative pronouns. So how is a question framed? Using all these interrogative pronouns. So when you want to ask a question, you have to start with an interrogative pronoun. So who wrote our constitution? चलो बताओ बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा? Who wrote our constitution? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. Very good, very good. Correct. Yes. And whom? He actually was the chairman. Right, chairman of the committee. So many people came Active together committee to chairman. make the constitution. Yeah. Now, whom is used? Sir, we will talk more on this slide, or explain in the next slide.
So like here, who like other pronouns such as I, he and she is the subject. So it is a person performing the action of the verb. Yeah. So who did it? Who likes it? That way, when you put WHO, तो उसको pronounce करना है as who, and you can use it in place of a person generally to know which person has done what action of the verb. On the other hand, whom like acts like me, him, and her in a sentence is the object. So, if I had to give an example of whom, so let's say for whom is the constitution written? So, for whom is the constitution written, बच्चों बताओ? For we the people of India. For whom? For us. Citizens of India. For the citizens of India. So, for whom acts like me, him, her in a sentence. Let me admit the people who have joined the waiting room. Right. So we have seen that I told you there are two parts to a sentence. One is the subject, then there is the object. So for whom is pointing towards the object, who is generally the subject. By using the word who, you will get a subject as the reply, and by using whom, for whom, you will get the object as the reply. So like if the sentence was Dr. B.R. Ambedkar and the committee wrote the Constitution of India for citizens of India. Wrote the Constitution for the citizens of India. So as you can see in this sentence, for के बाद जो भी है, after for whatever is there, that we can query by asking whom. For whom was the Constitution written? Like that. Now we use which and what to ask questions. We use which when there is a restricted range of answers, and we use what more commonly when the range of answers is not restricted. So when you are trying to narrow down the answer to 1, 2 or small quantity 1, 2, 3. So which players play in the Indian cricket team? It cannot be more than 11 active players plus the reserve players. But when you want to ask a much more wider question, then you go with what. So what teams are playing in the T20? That is a huge answer. And every year or every few years, we can see that the number of teams is changing a little bit here and there. Maybe they'll try to add more teams. We don't know. Or if you want to see what. So basically, open-ended, closed-ended, ऐसे दो type के questions रहते हैं. When you want more answers, then you leave an open-ended question. What? Like what are the subjects in your syllabus? So you'll get quite a lot of answers. But if you want to say which subject is in today's timetable, then it becomes a narrower question, narrower answer. So what and which decides if you want a very specific answer or if you want a broader answer. So for instance, let us look at this colorful sentence where all the parts of the sentence are given. You can see Kim carried the child to Bob. Now, Kim is the subject. That light blue color is verb carried, and the child is the object. And after the child, there is to, which is the preposition. That is another object of the preposition. There is a direct object, there is an indirect object. For the object, we can replace it with different pronouns. So Kim carried the child. The child can be replaced with it. And to Bob, so to ke baad, if you want to substitute Bob, you can say to him. The child carried it to him. You can also replace Kim with a pronoun. So Kim, if she is a lady, so you can say she carried it to him. That is an example of how sentence is made of different parts, and for different like for a subject you can go with
Now, if you want to convert this sentence into a question, who carried the child to Bob? So the first part, if you want answer for karta, for the doer, for the subject, you have to use who. Now, after that, for the object, if you want to ask the question, then Kim carried what to Bob? So what will give a general, you can get the answer for the child from the question what. And if you want to know the child gaya kiske paas, carried to whom. So Kim carried the child to whom. You will have to use whom instead of Bob if you want to understand कि बच्चा गया कहाँ. Where did the child go ultimately? Now we will see that first person, I, in this case, if I was Kim, then I would say I carried the child to Bob. And if you are Kim, so let's say if Jayditya is carrying Kim, so I would point out at Jayditya and say, and if he's in front of me, so I would say you carried the child to Bob. Are you trying to understand what I'm saying? When there are two people in front of each other, then one of them is I, the other person becomes you. Okay, so you carried the child to Bob. I would say if Jayditya in front of me had carried the child to Bob. But if there is a Sejal who is not in front of us, but in front of me, let's say I am here, this is me, and this is Jayditya. So if I am telling Jayditya, Sejal carried the child to Bob, so Sejal के बदले जो pronoun आएगा, that will be he. He carried the child to Bob. Children, any questions so far? कोई confusion, doubt, दुविधा पूछिए जरा. बहुत important है बच्चों. This is very key. क्योंकि इसके ऊपर आपका इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चंस पूछेंगे वो लोग. तो सारे एग्जाम्स, be it सारे CET, एग्जाम, GMAT, GRE, TOEFL, IELTS, ये सारे इसी पे निर्भर होते हैं. ओके, नो क्वेश्चंस. तो सब समझ में आ गया है? नहीं तो कुछ समझ में नहीं आया, जैसे मेरे टीचर कहते थे. क्या हुआ बच्चों? आप कौन से कंडीशन में हो? ओके सर, what do you want me to cover from this slide? Interrogative on whichever. Whichever, whoever. Now here, this all. Correct. So in interrogative pronoun, we have seen that I have shown you in that sentence, Kim carried the child to Bob, where to use which interrogative pronoun, right? So for the first part, who carried the child to Bob? Now, instead of who, when to use whoever. So whoever means any person at all, or it doesn't matter who. So whoever carried the child to Bob, raise your hand. Now, if you don't know whether it is a man or woman, and you just want to know from the all possible condition कि भाई whoever, जिसने भी लिया हो वाला भाव जब आप व्यक्त करना चाहते हो, you have to use whoever. In the letter that is written formally, there is whoever it is concerned. Like that, some letters are subjected. Because when you don't know who is reading the letter, you have to say whoever it is concerned or whomsoever it is concerned. Similarly, in this sentence, Kim carried the child to Bob. So Bob is a person. So if you want to ask, you will use whom. But instead of Bob, if there was something like to hospital, so that becomes a place. And when you want to ask about a place, you have to use the interrogative pronoun where. So if you wanted to know Kim carried the child to hospital, so if you want to ask the place, you would say Kim carried the child to which place, using which. But if you want to ask in a shorter way, you would say where did Kim carry the child to? Okay, so where, if you know the place is like one particular place, then it is where. But wherever means any place at all, or it doesn't matter where. So wherever Kim carried the child to, bring it back. I am not like, it can be one place, two place, three place. Kim could have gone to hospital 1, 2, 3, 4. Okay, wherever it has gone, now bring it back. That is one use case. So wherever is for more than one possible answer, and when you are
not sure about whether it is one location, multiple location, wherever the letter has gone. Achha, give me a minute. I have to attend the door. I'll be back in a minute. Till then, please put your questions in the chat box. I'll be back in less than a minute. Go ahead. Tell them the rules of framing a sentence, how sentences are framed. अकाउंट नंबर, पॅन कार्ड, आधार कार्ड असं आहे ते सगळं. Please mute. Please mute. Okay. Akashdeep, Sir. tell them the rules of framing a sentence, how sentences can be framed. Right. So These are very, very, very important rules that they have to learn and know. These are the 4 ways a sentence get formed, created, generated. Right. So there are some examples here. So in that colorful sentence earlier, you have seen that the subject verb was mentioned. Similarly here, it is talking about first kaun aayega. Pehle, what is the starting of a sentence? When there is a doer, when there is a karta, then that is your noun. That is your subject. So here the name of the subject is Smith. Bracket mein N means it is the noun. He is going to cut. Bracket mein V means it is a verb. At least one subject, verb and object comes together to make a basic sentence. Ask them what is a verb. So from the word verb, aapko kya samajh mein aaya? What do you understand? Can you mention by unmuting? What do you understand by VERB verb? Anybody? Go ahead. Sir, action. Good. Yes. So when you want to express an action, you use verb. So here Smith is going to cut her birthday cake. Now see, cut birthday cake के बीच में there is her. So this her is a possessive pronoun in this case. Whose birthday cake? Smith's birthday cake. If you want to know birthday cake किसका है, तो किसका है if you want to ask in English, you have to say whose. WHOSE. So that will go back to pointing Smith. Smith is the third person. It is not you, it is not me. Right? It is another person. So that way, Smith being a third person, the possessive pronoun becomes her. Now go to the rule number 2. Acha, before I go ahead, I want someone other than Jimena to unmute and tell me unko rule 1 mein kya samjha. You explain rule 1 in your words. Anybody? Sijal, Saman. Please, raise your voice. Akashdeep, your voice Hello, is may I? Yes, go ahead. Yes, sir. So the sentence is incomplete without the doer as well as the action he is doing. Right. Well done, Sanvi. Thank you, sir. Okay. So rule number 2. A complete sentence should include subject and predicate. Predicate is the part of a sentence or clause that tells what the subject is doing or what the subject is. So
another way to understand is after the verb, whatever follows becomes the predicate. The angry bird flew quickly across the sky. In the bracket that S is saying, angry bird is the subject, and then in the bracket that capital P is saying that flew across the sky is the predicate. In this case, they are considering the verb also as part of the predicate. So from the verb onwards, you can consider that the predicate has started. In the active voice, the noun is first, the subject is first, and then from the verb onwards, the predicate is there. Now, rule number, so a noun is just one word, a verb is just one or two words, but the subject and predicate have many words. Now we'll go to rule number 3. The only exception to the above rule is imperative sentence, command order. Go away, stand up, go there, get out. These are some command instructions. Can you notice that generally a command instruction it has to start with a verb. So the action is there and then direction is there typically in an imperative sentence. Ask them for an example. Yeah. So looking at these examples, now I want some of you to unmute and give an example of an instruction that you have heard from your parents. Sir, like shut the door, keep quiet. Keep quiet. Yes, anybody else? Silence, please. Very nice examples. I don't know who gave. Very nice. Yeah, it was Sanvi. Anybody else? Please go ahead, express yourself. This is your community. You can ask yourself, ask your doubts if you don't understand something. Move on to rule 4. Okay, rule 4. Adjectives can go directly before the noun which they describe. The angry bird flew across the sky. The bird is angry. Now the word angry, if it is before the noun, then it is an adjective. If it is after the verb, ask them what is the adjective means. What do you understand by the word adjective? So the word adjective describes the quality of the doer. So quality of the doer, the subject. The subject. Perfect, perfect. Very good. Sir, the subject, sir, the adjective describes the subject. Describes the subject. Perfect, perfect, perfect. Well done, well done. I will say, what's your good name? You said Sunny. Sunny is a beautiful child. So beautiful is defining Sunny. Sunny is adjective. Sunny is very attentive. Attentive. So it's an adjective. Attentive. Attentive. Then whatever defines the noun is adjective. Exactly. Go ahead, Akash. Correct. In this sentence, the bird flew across the sky. The angry bird flew across the sky. So the word angry is pointing towards the bird. It is the way it is the quality of the bird. You can convert this angry into a adverb also. So what is the way to do that? So if the angry is to be converted to an adverb, it will become angrily. The bird flew across the sky angrily. Angrily then becomes an adverb. So adverb and adjectives are used to give quality to the action or the person. So if it is for the person, then it is adjective, and if it is for the action, then it is an adverb. Sir, we'll proceed to the next slide. So, yes, go ahead, ask. So I have a doubt. Please ask. So what is the difference between adjective and adverb? Yeah, so I right now gave an example. When the quality is given to the noun, is an adjective. Angry bird.
happy boy, beautiful girl. Okay, sir. But when the quality is given to the verb, flew angrily, wrote badly or wrote nicely, or dressed beautifully. So one way to see is if it is ending in ly, it is an adverb. An adverb is giving quality to the verb. किया कैसे, तो कैसे किया उसे क्वालिटी देते वक्त एडवर्ब यूज हो जाता है. Okay, sir. Thank you. वेलकम. Yes, my doubt, please. हाँ. Sir, can you tell me again what is predicate? Okay. Now you give an example. You read out the rule number 2, and if you read out the rule number 2, you will understand. So go ahead, read it. The Ashu, angry right? bird Yeah. flew quickly across the sky. So before that, read the sentence in the bracket. A predicate is the part. From there you read. Ashu? The predicate is the part of a sentence or a clause that tells what the subject is doing or what the subject is. Okay. So in short, if I had to paraphrase in Hindi, predicate वो भाग है sentence का जो बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, नहीं तो सब्जेक्ट क्या है. ठीक है. तो एंग्री बर्ड के बगल में जो ब्रैकेट है उसमें एस लिखा है, दैट इज शोइंग दैट द एंग्री बर्ड इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. आफ्टर द एंग्री बर्ड, वो एंग्री बर्ड क्या कर रहा है. तो प्रेडिकेट मतलब बाकी का वाक्य, सरल सरल सीधे सीधे भाषा में सब्जेक्ट के बाद जो भी बचा वो आपका प्रेडिकेट. Okay, Sir, for example, Rahul is playing football. हाँ. Sir, Rahul is a subject वेरी गुड. and playing football is a predicate. वेरी गुड. Who else will give an example? Give little lengthy examples, lengthy ones, little long ones, long example. All right, sir. So students are attending English revision class on Zoom conducted by Saman-समण. In this sentence, students are the subject. Are attending is the main verb. What are they attending? So what is your object? First object, English revision class. And indirect object is समण-समण. But what has this indirect object done? It has organized this English revision class on Zoom. This is a large example. perfect. Types of pronouns. Abhi right away we discussed that after the first starting of the sentence is typically with a noun or pronoun. So that time it is a subject pronoun. And what is when the subject is doing something on something. So after the verb, whatever is there, that is the object. So if the subject is breaking something or it is writing on something, the subject is writing on a book. The book is the object. Now if you want to say whose book, so if you want to say the subject is writing on his book, her book, then that becomes possessive adjective. Possessive pronouns, his, her. Okay. So let's see the first line fully. So subject pronoun first person I am talking. Second person you are listening to what I am telling you. Third person male he. So he is, and third person female she is. Then third person it is.
So based on the person, the verb is changing. Okay, I am, you are, he, she, it is. Then the first person plural, we are. We are studying English. We are studying English together. That is we. Then second person plural, you are. So you can be second person single also. You is second person plural also. So when you are attending, you are addressing to a group in front of you, you have to use you. And third person plural is they. He, she, it, when they are more in quantity, when there are more than one female in third person, they. More than one person, more than one boy in third person, then also they. He, she, it, they आता है जब सब कुछ मात्रा एक से ज्यादा हो. Object Children, pronoun. mute yourself. Children, mute yourself. Children, mute yourself. Unmute when you have a doubt. Okay. Object pronouns. Saman gave me an opportunity to revise English for you. So here I ka me ho jata hai when I am at the object part. So Saman is the subject in this sentence. Similarly, object pronouns mein you hi rehta hai. You doesn't change. But he, she, it will change to him, her, it. So when you talk to somebody who is not in front of you, that person is him. So Pinky, you can mute Give yourself. two examples of subject pronouns and object pronoun. Examples. Yeah. Examples. So I am speaking on Saman-Sang's platform. If I want to convert that I into object pronoun, then Saman-Sang's platform lets me speak. ऐसा हो जाता है. So when you are in the starting, then it is subject. When you want to go back into the after the verb, then it becomes object. So another example. Example, Ram read a book. Ram is subject, read is verb. पिंकी के डिवाइस को म्यूट करिए प्लीज. पिंकी अपना डिवाइस म्यूट करिए. For example, Ram read a book. Ram subject, read verb, book object. Okay, I muted them. Now he, she, it. So he plays, she plays, it plays, and he, she, it plays with a ball, or he plays with the team. तो अभी he को अगर object में देखना है, the team lets him play. ठीक है? The team lets her play. The team lets it play. ऐसे. Similarly, we are going to. अच्छा, Jimena has a question. She has raised her hand. What is your question, Jimena? So, what is the difference between subject and direct subject? Subject and direct subject. Yes. Same. No. Where did you read this direct subject? Subject is usually direct only. Usually it is in some textbooks you will see that it is written direct subject and somewhere it is written subject. It actually means same. Direct, indirect is used with the object because there can be multiple objects after the verb. Okay. Yeah. So, sir, after this, which part you want me to go to? Reflexive pronouns. So, let me cover possessive pronouns. Yeah, possessive pronouns, right? Possessive and reflexive. Right. This. Possessive and reflexive
you have to distinguish them by what you are pointing at. If you are trying to show ownership of a thing, then it is possessive. Possessive something you're possessing it. You're trying to. This is my, like mine, something mine. Oh, this is yours. Second person. Possessive third person. His, hers. Correct. So possessive comes from the word possession, यानी अमानत, यानी आप अपना ownership जब व्यक्त करना चाहते हो, तो the laptop I'm using is mine, क्योंकि it is about first person I. Perfect. Similarly, your laptop is yours, third person laptop his, her, also. And there is nothing for third person singular. It के लिए possessive pronoun होता ही नहीं है. उसके बाद your entire family, let's say, is going to use a car, then it is our car. If it is in first person, my family, so my car is our car. I'm talking about the family, plural. Their family or your family के लिए your car, and similarly third person में their के लिए their car. ठीक है. Now we'll go to reflexive pronouns. So here we were talking about ownership of an object, but when it is reflexive, you are pointing towards yourself. When you're pointing towards yourself or pointing towards herself, so that is a reflexive. यानी कर्ता के ऊपर जब आप फिर से reflect करना चाहते हो. Generally, then it is myself. So here I myself wrote something, or I myself appeared for my exams. I say reflexive is generally used for emphasis, to give weight to some subject or some action that the subject has done. Mostly it is used as a emphasis. So you yourself have to unmute your Zoom, or he himself has run a marathon. That is an example. For example, reflexive noun. He is doing work by herself. Exactly. Very well. Who else wants to give example? सर एक बार से बताना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. You can do this work yourself. Bilkul. You should do your work yourself. Similarly, There is a question in front of you guys. Just see, this is a GMAT question. GMAT is for your graduation. But see what you are learning is how much important. Now see the question there. this is a very difficult decision that will not be taken lightly either by him or myself. Now, which is the correct answer? Either by him or myself के बदले और क्या-क्या बैठा सकते हैं, that you have to understand. Possible answers either by him or myself. Another is either for him or myself. Neither by him nor myself. So you see, reflexive pronouns are used here. Which is the correct answer, guys? ये वाला correct है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है या ये वाला है? अभी जो है आकाशदीप ने पढ़ाया है तुमको, कौन सा करेक्ट आंसर है? A, B, C, D और E? Which one? Sir, option C. Neither by him nor myself. Neither by him nor myself. Why you are using neither? Sir, not either. I'm saying option C. Neither by him nor myself. हाँ, but The आपने वो answer is subject. either by him or me. हाँ. So because not is already used. क्यों ये? Either by him. Either by him or. In these kind of exams, students, what is there? You are not supposed to change the word either by him.
Me or because not is already used. So the point is, either by him or me. either by him or me is simpler to listen, and there is no need for emphasizing on yourself here. That 1 minute, 1 minute. Who answered that C? What is her name? Sir Sanvi. Sanvi, sun abhi. 1 minute, huh? Yes, sir. Just observe the screen. Either and neither are used to refer two different things or choices. Either is used before the first of the two or more options, or to indicate a link with another statement. Right? Neither is used before the first of two options to signal that they are Now there is something, neither of them and either of them. These are very different things. When you are selecting neither and either, you are changing the meaning of the sentence. Did you get that? Yes, sir. I got You it. should not have done that. Because the moment when you change neither to either, तुमने तो पूरा उसका meaning ही गलत कर दिया. There is a big difference between neither and either. मतलब या तो या फिर ना तो. Neither and either. तो ये जो है ना, यहीं पे हमको पकड़ते हैं वो लोग. You have to understand that. Okay. Yes, sir. Thank you, Akash, sir. continue. Akash, continue. So सर लास्ट स्लाइड में वो सेंटेंस रीड करना है. हाँ, इसके बाद. हाँ, स्लाइड नंबर 14 में ना. हाँ, a subject pronoun takes the place of the subject of the sentence, which is the noun doing the action. The subject pronoun includes I, he, she, you, it, he, and they. And the second type of pronoun is the objective pronoun. Okay, okay. So we have covered all of this. No doubts, right? We can proceed. Okay. Is the same slide. 14, 15 are same. Okay. Okay. So 16. Whatever, anything, or it doesn't matter. We can do whatever we want now. Guys, I want Akash, ask different guys, right, to give one example of this. This is very easy. Whatever, whichever, whenever. Ask them to make a sentence. Right. So using whatever, who will give us an example? Sir, may I? Please go ahead, Sanvi. Yes, sir. Sir, he can do whatever he want after studying. Very good. Sorry? She said we can do whatever we want after studying. Good one. Similarly, thanks to Dr. whatever Ambedkar, it takes, it may take. I am going to go to London for the conference. Whatever it takes. Yeah. Whatever it takes, we can be toppers in our domain. We can improve the condition of our family. Whatever it takes. जो भी करना पड़े करने का. रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठना हो, डिसिप्लिन मेंटेन करना हो, maintaining your timetable, being honest to yourself about your preparation, whatever it takes. Similarly, thanks to Dr. Ambedkar, we can now pursue whatever profession we want. 75 years before, 80 years before the contribution of Dr. Baba Saheb, we could not do whatever profession we wanted. Our choices in life were dictated by other people.
for generations. So now that freedom to do whatever we want, we owe it to Dr. Ambedkar and to our parents. So that is why Saman, Rajesh ji is telling, whatever it takes, we need to put that kind of effort to make the best out of our opportunities. See, we have a person here, Rutuj Kamble, who's going to talk about his story, whatever it took him to reach to IIT. Okay, so we will ask him to talk, not now, but very quickly, whichever, whenever. Whichever. तुरंत बोलो. It should take you only 1 minute, children, to frame this. 1 minute में आने चाहिए. So whenever you want my help, you can ask me. Perfect. The next one. Quickly. Wherever, जहाँ कहीं भी. Wherever you want to go, you can. Very Yeah. good. Whoever. We can go wherever you like. Whoever का Good. example दीजिए. Whoever known this question, raise the hand. Very good. Okay. However. However, quickly. And then you have this exercise. Quickly filling this with this, that, these, those. Chalo, fatafat. Akash, just take this. Yeah, sure. Look at newspaper here. So newspaper here is signifying closeness. Look at this newspaper. Well done. Perfect. Dash are my grandparents and dash people over there are my friends' grandparents. So these grandparents are closer. So which will be the pronoun? These are my grandparents. These are my Grandparents Correct. and those peoples over there, my friends, grandparents. These are my grandparents and those people over Well done, there, well my done. friends' Chalo, moving on to number 3. father. Dash building over there. My So over there means far away. So which pronoun? That building. That building. That building. Perfect. Number 4. This Number 4. building over. This is my mobile phone. And This is my mobile phone Mobile phone over the shelf. and that is your mobile phone. that is your mobile phone. On Yes. the Only one object, so that is why that is used. Correct. Now number 5. Dash These photos here. These photos are much better than those. And those photos on the book. Very good. Photos on the book. Number 6. This That was a great learning. That was a great morning, evening. Yes. Excuse me, sir. Are those pencils? Are those your pens? Are those your pencils here? Are these your pencils here? Pencil कहाँ है? नजीक है कि दूर है? Here मतलब close. So that is why these. These. Dash bottle over there is empty. So over there बोल दिया तो that. That bottle over there is empty. These are my pencils. Number 9. Dash bricks over there are for your chimney. So over there is far away. Those. So what will be? Those bricks over there. Those bricks over there are Number 10. are for Number you. 10. John, take dash folder and put it on the desk over there. So over there. But This. This folder. John, this take is a this tricky folder. question. That is Yes. over. Next time we will have a tougher exam now. Okay? Yes, sir. Okay, sir. Now leave it to Katke sir. Hand it over to Katke sir, Akash. Sir, I will just take 1 minute to show something. Please. Yes, you continue, Akashdeep. Yes. Yeah, 1-2 minutes I will show this and then we will give it to Katke sir. Please stop your screen share. Excuse me, sir. Go ahead. बोलिए. Excuse me, sir. What is the question? Sir, I have a humble request. Can I please get the recording of the last class? We will get back to you.
somebody else is looking at it. I don't manage the recordings. Okay, sir. So can you please ask other sirs? Which one? We will, So the last one. okay, we will give you. Already. Okay, thank you, sir. You put your request through your parent on the personal wall directly, and we'll see. Now I just Students, all program is recorded. Don't worry. We will make you possible. We will make possible for you in our groups. Don't worry. And Yes. sir, is there any Akashdeep group sir. for especially? Pariyar sir will forward it to us. Okay, sir. Sir, is there any specific group for children's only? I mean, the youth one. Yes, youth also now, just now, the Rutuj Kamble, who is selected as IIT Kharagpur, he will talk on some lines, how Can to you study see? for young students and youths. And then I will tell some certain foreign scholarships and all that. And then also I will tell about Baba Sahib Ambedkar. It will be Can you for see you my screen? mostly. Can you see my screen? Yes, 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 yes. sir. So this is OpenAI, a company which has released something called ChatGPT, and this ChatGPT they have made Excuse it me, so sir. smart. This is a website. Sir, I have no So this website. I have tried also. right, good. So let me explain it to others. Till then, mute yourself. So those Excuse of sir, you whose sir जी English is थोड़ा not strong, ये समझा even they देंगे, can इसकी ask समझ नहीं questions आ and ChatGPT can understand it. One example is, मैंने ऐसे ही mixed English में पूछा था, what do you understand, and it replied also, जी हाँ मैं आपकी English को समझ सकता हूँ, so on and so forth. Now I will show you an example of how to use it in your study. So if you gave it a question, like if you gave it a statement, boy play badminton today, intentionally I made a spelling mistake here, grammar mistake here, and I asked him to correct it in slang, in English, and it gave the correct sentence. The boy played badminton today. So it can do some minor corrections for you also. Now look at this. If you don't understand a word and you ask it, the equilateral triangle has 3 equal sides को English में समझाइए, तो it will give one example, one answer. The equilateral triangle एक ऐसा triangle है जिसमें तीनों sides बराबर होते हैं. Once it gives an answer, you have an option to regenerate also. So now I asked him, triangle क्या है? I am trying to help you to understand how you can use ChatGPT to get your basic doubts solved. So if your parents are busy or something, and instead of scrolling on some social media, it is better you ask doubts and see what is the answer from ChatGPT and then confirm it with your elders also. So now it is giving you what is a triangle. So एक triangle एक geometric shape है, so and so. This is for students whose English is not fully developed. So then you can see what it is explaining in half English. सर एक बार फिर से बताना. हाँ तो देखिए अगर आपने ट्रायंगल क्या है इसको पूछा चैट जीपीटी में जाके तो वो ट्रायंगल आपको वो समझा देता है. म्यूट कर लीजिए भाई. कोई डाउट है तो पूछिए. आपने ऐसे ही लिख दिया इसमें, जैसे इसमें लिखने के लिए एक जगह पे कर्सर आता है, यहाँ पे सेंड मैसेज. तो इफ यू राइट हियर इट विल स्टार्ट करेक्टिंग. सो इन दिस केस लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ how to conjugate the verb inside a single quote make in past participle, past perfect. चलो in perfect past tense. तो ये आपको आंसर बता के दिखाएगा. देखो परफेक्ट पास्ट में क्या होता है. इट इज सेइंग to conjugate you have to use auxiliary verb have along with the past participle form of the main verb make. The past participle of make is made. So I, you, we, they had made, he, she, it had made. This is an example of how it is giving you answers. Now if you cannot ask this question in pure English also, how to conjugate the verb make in past perfect tense, you should at least know this much, past perfect tense and make, and then you can even ask it in English.
तो मेक को पास्ट परफेक्ट, make you need to put in inverted comma. What I am doing is I am showing you how to ask question from chat GPT, and this is called prompt engineering. So make को past perfect tense, you have to put the English in the single quote, and then you can ask मैं कैसे बताएं. चलो, let us see what answer it will give. बताएं. मेक का पास्ट परफेक्ट टेंस हैड मेड होता है. इसका इस्तेमाल एक्शन के रेफरेंस में होता है जो दूसरे पास्ट इवेंट से पहले कंप्लीट हो चुका है. इट इज इवन गिविंग यू एन आंसर इन इंग्लिश, एंड द आंसर इट इज गिविंग यू इज द सेम दैट इट हैज गिवन इन इंग्लिश. तो जिन बच्चों को अंग्रेजी में पूरे सवाल नहीं आते हैं पूछने का, लेकिन अगर आपको पता है कि आपको मेक का पास्ट परफेक्ट टेंस चाहिए, तो वो आपको पूरा का पूरा खोल के दिखा देगा. This is one way students can use ChatGPT to get their basic English doubt solved, but this is not a textbook. आपको यहाँ से मिला हुआ उत्तर फिर से किसी व्यक्ति से कंफर्म कर लेना है. ठीक है? We can spend hours and hours on how to ask questions from ChatGPT. The process of asking questions from ChatGPT is called prompt engineering. The way you put things in single quote, and then you ask the question. So that's all I had to share. Now, Katke sir can take it forward. Excuse me, sir. My children hand is Vivo 2004. कौन बात कर रहा है? कोई डाउट पूछ रहे हो कि म्यूट कर लो भाई? Excuse me, sir. हाँ. Sir, what is the website name? I am putting it in the chat box. It is called ChatGPT. ठीक है? उसमें you use your parents' phone number or something. You need to register there. Then you can ask questions like this. ChatGPT, and I will put the exact link also. Give me a minute. Okay. Chat, I have put it in the chat box. You can copy from the chat box, put it in your browser, share it with your parents. But don't think of it like a textbook, okay? It is not going to give 99-100% answers. It will give you 90-95% accurate answers. तो जो भी आंसर वहां से मिलता है उसको फिर से अपने किसी एडल्ट से कंफर्म करवा लेना. और क्वेश्चंस उसमें छोटे छोटे पूछने के रहते हैं. ज्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछोगे तो यू विल गेट इनकरेक्ट आंसर्स, और यू माइट गेट यू माइट part you have to put in single quotes like I had put. Okay. Now we will give the screen to Katke sir. Please welcome Katke sir. Yes. थैंक यू वेरी मच आकाशदीप सर एंड राजेश कामले सर. राजेश कामले सर की आवाज ठीक नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने काफी ढंग से हमारे सामने प्रेजेंटेशन दिया है, और आकाशदीप सर ने हमको बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया है. तो बच्चों ये मत समझना कि जो लोग यूथ है वो ये ना समझे कि ये स्कूल गोइंग बच्चों के लिए है. बिल्कुल नहीं. ये नीट के क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, आईआईटी के एग्जाम में भी आता है. मतलब आपको जो बड़ी बड़ी एग्जाम्स होती है ना, प्रोफेशनल एजुकेशन की, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, या एमबीएस की एग्जाम्स है, इसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो इसका मतलब है कि जो हमको पढ़ाया जा रहा है अभी, तो आकाशदीप सर ने हमको चैट जीपीटी के बारे में बताया. ये तो फ्यूचर लैंग्वेज है कि जैसे आपको इंग्लिश कुछ भी नहीं आती लेकिन हिंदी में आप सवाल पूछते हो तो उसका इंग्लिश में बताया जाएगा. इंग्लिश का अगर नहीं आता हो इंग्लिश में भी आप मिलेगा आपको. ये आप टाइप कर दो, ये आपका, आपके पास टाइपराइटर नहीं है हिंदी का, तो ये सारे कुछ सवालों का जवाब अभी हमको ऑनलाइन अवेलेबल होगा. तो इसका इंट्रोडक्शन हमको आकाशदीप सर ने बताया. इसीलिए सभी की तरफ से हम लोग उन दो राजेश कामले सर और आकाशदीप सर को धन्यवाद देंगे. ठीक है? उनके लिए साधु साधु बोल दो सभी. साधु साधु साधु.
अभी बच्चों, अभी अगले सत्र में हम लोग आज ऐसे, थैंक यू वेरी मच, साधु साधु साधु। थैंक यू हाँ सर, थैंक यू वेरी मच। अभी हम ऐसे एक बच्चों को, यूथ को बुलाना चाहते हैं जिसने आप जैसे ही फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके तो 12th स्टैंडर्ड तक काफी बहुत गंभीरता से पढ़ाई की, स्टडी की, और उन्होंने आईआईटी की एग्जाम के बारे में आपने सुना होगा आपके मम्मी डैडी से या टीचर से या स्कूल से, कि आईआईटी की और आईआईएम की एग्जाम टॉप मोस्ट एग्जाम होती है 12th के बाद। तो वो एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी करनी है, उसके लिए क्या कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है, उसमें से क्या क्या रुकावटें होती है, क्या हडल्स आते हैं, इसके बारे में ऋतुज कांबले हमारे बीच में है। वो 4-5 मिनट बात करेंगे और उनको आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि आपको भी आगे जाके 12th के बाद इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, आईआईटी में, आईआईएम्स में जाना है। और अगर आप ये भी नहीं करते हो तो आप फॉरेन कंट्रीज में भी जा सकते हो हायर स्टडीज के लिए। तो मैं ऋतुज कांबले को यहाँ पर इनवाइट करता हूँ। ऋतुज प्लीज अपना माइक खोलिए और अपना परिचय देके अपनी बात रखें। ऋतुज। यस सर। संगम नवनी, मैं ऋतुज कांबळे। अपने माइक म्यूट करके रखिए तो। हाँ यस ऋतुज। संगम नमामि, मैं ऋतुज कांबळे और मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। तो सर जैसे आप ये जो हर रविवार लेते हैं, मतलब जो प्रोग्राम चलाते हैं स्टूडेंट्स और यूथ को पढ़ाने का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अपने समाज के लिए ये बहुत जरूरी है। बाहर जब जाते हैं तो बच्चों के लिए डिस्क्रिमिनेशन चालू हो जाता है। जब से बच्चे बाहर जाने चालू हो जाते हैं तब से डिस्क्रिमिनेशन चालू हो जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब बड़े बड़े कॉलेजेस में जाने लगते हैं, बड़े बड़े मतलब इंस्टीट्यूशन में जाने लगते हैं, तो बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन जाने लगता है, पर कुछ कुछ बच्चे उसके लिए आवाज नहीं उठा सकते। तो इसलिए ये संघ बना है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। और जो कि मेरे भाई अभिजीत अदव ने मुझे इसमें जोड़ा है, और रमेश सर जो मेरे मतलब बड़े पापा की तरह है, उन्होंने भी मुझे जोड़ा है। तो मैं इसके लिए भी बहुत खुश हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि 1ली से 10वीं में जो बच्चा जाता है, तो वो 1ली से 5वीं तक तो बच्चा का उसका जो ये रहता है बेसिक सीखने लगता है, मतलब एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो भी रहता है, तो उससे कुछ नहीं। बट जब बच्चा नहीं के बड़ा होने लगता है तो उसकी मैच्योरिटी 6 क्लास से चालू होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब बच्चा 6 क्लास में जाता है तो उसका बाहर की दुनिया के साथ कांटेक्ट करना चालू हो जाता है, और जब कांटेक्ट आना चालू हो जाता है तो बच्चा सीखने लगता है कि आगे आगे क्या होता है, क्या होने सकता है। और मैं ये भी सोचता हूँ कि जब बच्चा 6th और 7th में आ जाता है तो उसको मतलब टीन एज में आने लगता है, तो उसको और नई नई चीजें मालूम पड़ती है। जब नहीं कि बच्चा टीनेज में आने चालू हो जाता है तो ऐसा होता है कि कुछ कुछ बच्चे उसको पीछे खींचने के करते हैं। मतलब जो बच्चा आगे रहता है तो उसको कुछ बच्चे पीछे खींचने के करते और खुद आगे जाते। नहीं तो जो जो रहता है तो उसको बच्चे गलत संगत का असर कर देते हैं। तो 6th और 7th में तो मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले बच्चों ने अपनी संगत अच्छी से रखनी चाहिए, क्योंकि जब संगत अच्छे रखोगे, अच्छे दोस्त रखोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि कुछ कुछ बच्चों के विचार अच्छे रहते हैं तो उनके विचारों के साथ आगे चलना और अपने विचार जोड़ना, ये बहुत अच्छी बात होती है। जब बच्चा 8वीं में आ जाता है तो उसका टीनेज में मतलब पूरी तरह टीनेज में आ जाता है। जब वो पूरी तरह टीनेज में आ जाता है, मतलब 13th चालू हो जाता है, 13 या 8 में आने के बाद, तो बच्चा अपने इसमें चेंजेस आने लगते हैं, मतलब मैच्योरिटी आने लगती है और बॉडी चेंजेस वगैरह तो होते हैं। तो जैसे जैसे मैच्योरिटी आने चलती है तो बच्चे ने क्या बहुत आगे मतलब आगे की सोच लेते हैं कि हमें ये करना है, ये करना है। पर जब बच्चा टीनेज में आता है तो उसने अपने विचारों पे ठाम रहना चाहिए कि मुझे यही करना है। जब तक आप अपना पैशन नहीं बना लोगे, और पैशन को जब तक अपना प्रोफेशन नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक ही जब मैं तो मेरे मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बच्चा 8वीं में आ जाता है तो उसने एक ऐसा गोल सेट करना चाहिए कि मुझे सपना था, मुझे नेवी में ही जाना है, नेवी और इंजीनियरिंग करना है। तो मैंने यही सोच लिया था। तो मैंने बचपन से, जब मैं 6th में था, तो नवोदय विद्यालय नाम का एक ये है, वहां तक मैंने पढ़ाई की।
10th तक। तो 6th क्लास से और 10th क्लास से वहाँ पे पढ़ाई की। तो मैं उधर चला गया, उधर से मैंने पढ़ाई की और वहाँ से मुझे बहुत सारे टीचर्स अच्छे मिले, दोस्त अच्छे मिले और गाइडेंस अच्छा मिला और माता पिता जी का साथ था। तो हमारे स्कूल में कंपलसरी बात थी कि जब बच्चा 6 में आ जाता है तो उसको आईआईटी फाउंडेशन की जो किताबें मिलती है बाय यश चंद पब्लिकेशंस के, वो कंपलसरी थे। तो वो कंपलसरी सॉल्व करने पड़ते थे जब तक 10th तक। तो हमने वो 10th तक सॉल्व की। फिर बाद में 10th के बाद हमें तो मैंने तो बाहर एडमिशन ले ली, औरंगाबाद मतलब यहाँ पे एक सिटी है, तो वहाँ मैंने एडमिशन ले ली थी। तो वहां से मैंने 11th और 12th में किया था। तो बाहर मतलब मैं जहाँ रहता था नवोदय में, वहाँ बाहर की दुनिया से एक अलग ही दुनिया थी। मतलब जैसे कि रेसिडेंस होने के कारण वहाँ पे क्या होता था कि अंदर हमें हमारा बाहर की दुनिया के साथ ज्यादा कांटेक्ट नहीं आता था और वैसे पता नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है और कंपटीशन के बारे में नहीं पता था। जब मैं 11th में बाहर आया तब पता चला कि हम जो कर रहे हैं वो दुनिया की सिर्फ 10% में आता है, क्योंकि हमने जितनी पढ़ाई की थी वो सिर्फ 10% में आता था। मतलब ऐसा था कि जब आ जाते हो आप तो पता चलता है कि 11th 12th में आपको कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। कुछ कुछ बच्चे मेरे साथ थे जो रात दिन एक कर देते थे, मतलब रात को सोते थे, पढ़ाई करते, जैसे कभी भी मतलब नींद खुल जाती थी तभी भी बस किताब खोल के फ्रेश होने के बाद किताब खोल के बैठ जाएंगे। ऐसे ही बच्चे मिलते थे। तो वो भी आज अच्छी अच्छी जगहों पे लगे हुए हैं। पर जब आईआईटी और एनआईटी के लिए आप मतलब प्रिपेयर करते हो, स्पेसिफिकली मैं उसके बारे में बताऊँ क्योंकि मैंने उसके बारे में किया था। तो आपको पीसीएम ग्रुप लेना पड़ेगा और जब पीसीएम ग्रुप पर लोगे तो आपको मैथमेटिक्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आगे जाके कहीं पे भी काम में आ सकता है। और मेरा तो वैसे भी पीसीएम प्लस बायोलॉजी था, तो मुझे ऐसा टेंशन नहीं था क्योंकि मेरे लिए सब फील्ड खुली हुई थी। अभी मेरा आईआईटी के लिए भी हुआ था और एक मरीटाइम यूनिवर्सिटी है मर्चेंट नेवी के लिए, उसमें भी हो गया था। तो मैंने आईआईटी खड़गपुर को ही चूज किया था मतलब क्योंकि प्रेफरेंस वही दिया मैंने। और बस बाकी तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा। थैंक यू। संगम नमामि। थैंक यू वेरी मच ऋतुज। अभी देखो बच्चों, ऋतुज ने बहुत अच्छी बात कही है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक हमको क्या क्या करना चाहिए। खासकर उन्होंने ये बात की है कि हमारा जो फोकस है वो फोकस हमारा स्टडी के ऊपर होना चाहिए। दूसरी बात ऋतुज ने ये कही है कि मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। हम किसके साथ रहते हैं। तो स्कूल में हमने ये फोकस करना चाहिए कि हमारे जो भी दोस्त होंगे, मित्र होंगे, तो वो ऐसे होने चाहिए कि जो सिर्फ पढ़ाई की बात करते हो, इधर उधर की फालतू बातें ना करे, और जो पढ़ाई के ऊपर ज्यादा कोशिश करता है उसी के साथ हमको कंपनी बनाकर रहना है। हमारा माइंड का फोकस किसी भी हालत में दूसरी चीजों के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऐसा अगर करोगे तो ही जैसा ऋतुज हो गया वैसा आप सभी लोग आईआईटीज में, आईआईएम्स में, हायर स्टडीज में, फॉरेन कंट्रीज में पढ़ने के लिए जा सकते हो। और दूसरी बात मैं बता दूं, अगर 12th के बाद आपको फॉरेन कंट्रीज में जाना है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है वो खुद स्कॉलरशिप देती है। उसमें सिर्फ जरूरत ये होता है कि आप उसके मेरिट में अगर आ जाते हो तो आपको, एक तो हमारा एक स्टूडेंट है अमरावती से, उसको 1.5 करोड़ का स्कॉलरशिप मिला एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से, यूके से। तो उसने क्या किया कि ग्रेजुएशन होने तक जितनी भी फॉरेन की 100 रैंक से बिलो वाली जो भी यूनिवर्सिटी थी, उन यूनिवर्सिटी में कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी है और उसमें जिसमें उसको रिसर्च करना था उसके बारे में वो 3 साल तक पढ़ाई करता रहा। उसकी उसने बहुत कोशिश की और बाद में जाके उसने इंटरव्यू पास किया और एग्जाम पास की, तो यूनिवर्सिटी ने खुद होकर उसको 1.5 1.5 करोड़ की स्कॉलरशिप मंजूर की है। दूसरा ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और अलग अलग स्टेट्स की, राज्यों की भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती है। तो ये स्कॉलरशिप भी आपको आसानी से मिल सकती है बशर्ते कि आप उस एग्जाम के लिए ईमानदारी से तैयारी करें। तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है। अब मैं बाबा साहब के बारे में आपको चंद बातें बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में आपने तो सभी ने जाना है कि उनके वक्त स्कूल में उनको स्कूल के बाहर बिठाया जाता था। एक मैं
उनका एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब वो चौथी कक्षा में थे, वो शायद 8 या 9 साल के होंगे, तो उस वक्त उनके टीचर ने एक गणित बताया, मैथ्स, और वो ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए बोल दिया। तो स्कूल के अंदर जो जितने बच्चे बैठे थे रूम में, उनको किसी को आंसर नहीं आता था। एक ही बच्चे ने हैंड रेज किया था, वो भीमराव रामजी अंबेडकर नाम का बालक था। लेकिन जब उसको गुरुजी ने बोला कि ये बेटा आ जाओ और ये ब्लैक बोर्ड पे आपको ये सॉल्व करके बताओ, तो दूसरे बच्चे चिल्लाने लग गए कि रुको गुरुजी, हमारे वहां पर टिफिन बॉक्सेस रखे हैं, ये तो अछूत है, ये क्या हमको सिखाएगा। पहले टिफिन हम बाहर खींच लेते, फिर बाद में इसको ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए बोल देना। तो ये प्रसंग बाबा साहब के मन पर बहुत ही गहरा पड़ गया, और वो सोचने लगे कि मैं स्कूल में अकेला ऐसा बच्चा था, अकेला ऐसा स्टूडेंट था, वो गणित का आंसर मुझे अकेले को आता था, लेकिन फिर भी सोशली ये बच्चे मेरे से ऐसा अभद्र व्यवहार करते थे कि जो कि अनुचित था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया बचपन में कि मैं इतना बड़ा विद्वान हो जाऊंगा कि मैं सभी को सिखाऊंगा कि ज्ञान क्या होता है। तब से चौथी में ही बाबा साहब ने, जब छोटे भीमराव थे, तब ये प्रण कर लिया कि मुझे बहुत बड़ा बनना है। और तब से उन्होंने इतनी किताबें पढ़नी शुरू कर दी। और वो कहते हैं कि मेरे जिंदगी में मैं इतना बड़ा इंसान क्यों बना हूं। तो कहते हैं कि मेरे 3 गुरु थे। 3 गुरु कौन कौन है बताएंगे आप में से कोई? एक एक करके बताओ, बाबा साहब के 3 कौन कौन गुरु है? कोई बताएगा? हैंड रेस करो। बुद्ध, यस बेटा बताओ। बुद्ध, बाबा साहब के ज्योतिबा 3 गुरु फुले, थे, बुद्ध, मास्टर्स। ज्योतिबा फुले, यस गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले, यस। और तथा गौतम फिर बुद्ध, गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फूले गौतम और बुद्ध, रविदास। ज्योति फुले, तथा गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले, एंड थर्ड गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फुले, संत कबीर। हाँ सही कहा, सही कहा, सावित्रीबाई फुले, बहुत बढ़िया। पहले गुरु थे तथागत गौतम बुद्ध, सावित्रीबाई दूसरे फुले, थे संत कबीर, और तीसरे थे ज्योतिबा फूले। तो बाबा साहब ने कहा कि मेरे 3, अभी बंद कर दो बेटा, अपने माइक बंद रखो हाँ प्लीज। तो उन्होंने कहा कि ये 3 गुरुओं की वजह से मैं मेरी शिक्षा में बहुत सुधार लाया हूँ। उनकी शिक्षा किस चीज पर आधारित थी? तथागत बुद्ध की इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जस्टिस एंड लिबर्टी, है ना। उसको JEL कहते हैं हम लोग, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी। तो बाबा साहब ने कहा कि ये इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी और जस्टिस की जो विचार है, मैंने मेरे गुरु बुद्ध से लिए है। उसके बाद वो कहते हैं कि संत कबीर का जीवन जो है त्याग भरा जीवन था। वो संत होने के बावजूद भी उन्होंने इतने अच्छे दोहे लिखे, उसमें से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी। क्योंकि बाबा साहब के पिताजी कबीरपंथी थे, उनके घर में कबीर के दोहे को हर दिन पढ़ा जाता था। तो ये बचपन में उनके ऊपर बहुत बड़ा संस्कार होगा संत कबीर का। उसके बाद ज्योतिराव फूले ने बाबा साहब को सामाजिक आंदोलन कैसे चलाया जाना चाहिए ये सिखाया। तो बाबा साहब कहते हैं कि समाज में अछूत का भाव जो होता था, उसको निकालने के लिए ज्योतिराव फूले ने सबसे पहले स्कूल शुरू किया, सावित्रीबाई ने और ज्योतिबा फूले ने। तो स्कूल में सारे जो हमारे पूर्वज अछूत लोग थे, हमको स्कूल में पढ़ने की इजाजत भी नहीं हुआ करती थी। तो बाबा साहब कहते कि 3 गुरुओं की वजह से मेरा जो बचपन का जीवन है वो बहुत प्रफुल्लित हो गया, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया। आगे वो लिखते हैं कि मेरे उपास्य दैवत है 3, 3 चीजों के ऊपर मैं बहुत विश्वास करता हूँ। तो वो कहते हैं कि मेरा पहला दैवत या मेरा पहला बिलीफ है विद्या पर, यानी एजुकेशन पर। मैं एजुकेशन को अपना दैवत मानता हूँ। और क्योंकि वो कहते हैं कि विद्या के बगैर आप बड़े हो ही नहीं सकते। अगर आपको MA, PhD, DSc, LLD, बैरिस्टर या लॉ बनना है, या इंजीनियरिंग, मेडिकल में जाना है, IIMs में जाना है, तो आपको पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट करना ही होगा। बगैर पढ़ाई के आप लोग ज्ञानी नहीं हो सकते। तो इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि विद्या मेरा पहला दैवत है। वो कहते हैं कि दूसरा मेरा दैवत है विनय। विनय यानी कंडक्ट, सील, मोरालिटी। तो बाबा साहब कहते हैं कि बचपन में मेरे पिताजी ने हमको मोरालिटी की बहुत बड़ी शिक्षा दी। हमको जब तक, उस वक्त के जो ग्रंथ होते थे वो जब तक हम पढ़ते नहीं थे,
जैसे कि कबीर के दोहे, ज्योतिबा फूले के कुछ सेंटेंस जब तक नहीं पढ़ते थे तब तक हमारे पिताजी खाना नहीं देते थे। और वो कहते थे कि बड़ों का रिस्पेक्ट रखना है। जैसे कि बुद्ध ने जो वज्जी लोगों को संदेश बताया कि विनय के साथ कैसे रहना है। हमारे गुरुजन है, हमारे बड़े लोग हैं, हमारे बुजुर्ग है, समाज के लोग होते हैं, उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त करना। तो इससे बाबा साहब कहते कि मेरे पर्सनालिटी में विनय की शिक्षा आ गई। और वो कहते कि मेरा तीसरा दैवत है शील। शील यानी जो कंडक्ट होता है ना हमारा, जैसे कि पंचशील आपको पता है, पानातिपाता दीन्य दाना, है ना, कामे सुमिच्चाचारा, मुसावादा और सूरा मेरे मज्जपमाद ठाना। ये 5 शील जो है ये मेरे जीवन को पूरे बनाए हैं। आगे जाके वो कहते हैं कि मुझे जिंदगी भर बहुत सारे लोगों ने तकलीफ दी, लेकिन मैं शीलवान था। मैंने कभी अपना काम नहीं छोड़ा, मैं बहुत लगा रहता था अपने काम पे। ये इस वजह से संभव हुआ क्योंकि मैं शीलवान था। तो बाबा साहब की ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये एक तो 3 गुरु कौन है, दूसरे 3 दैवत कौन है, ठीक है, याद रहेगा आपको। यस सर। अब फिर से बताओ कि बाबा साहब के 3 गुरु कौन थे, हैंड रेस करो, कोई भी एक बताएगा। यस जयदीप बताइए। बाबा साहब की 3 वेदहत पहले साहब ज्योतिबा फूले, गौतम बुद्ध, तीसरा संत कबीर की दास जी। हाँ गुड, वेरी गुड। अब 3 दैवत के बारे में बताओ कौन से हैं। पहला वाला गौतम बुद्ध जी। गौतम बुद्ध जी। नो 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 नो, अभी सेकंड क्वेश्चन पूछा मैंने। पहला था विद्या, विद्या यानी एजुकेशन। बाबा साहब ने कहा कि एजुकेशन को मैंने अपने जीवन का टारगेट बनाया था, पहला वाला। दूसरा है विनय का, विनय, लोगों के साथ बिहेव कैसे करना। और तीसरा है शील, शील यानी कंडक्ट, जैसे पंचशील है, अष्टशील है, ये वाली बातें। तो आपको ये याद रखना है। अभी हम लोग ये पोर्टल खुला कर देते हैं, जिसको भी बात करनी है वो 2-2 मिनट में अपना परिचय देंगे और अपनी बात रखेंगे। किसको अपनी बात करनी है बताओ, हैंड रेस करो। और 2-2 मिनट में बात करनी है। ये 15-20 मिनट चलाएंगे, फिर हम पोर्टल क्लोज कर देंगे। यस सत्य प्रकाश सर, आपका परिवार सर, आपका हैंड रेज है। अच्छा मैं जी बोलूंगा, हेलो सर, आई एम राज। संगम नमामि सभी। मेरा नाम यार है और डाकसू में रहता हूँ। ये मैं +1 क्लास में हूँ। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। संगम नमामि सभी। यस बताओ। My name is Manya Singh. I study in class 5th A. My